So now, in this LC oscillation, we are going to consider two components. One is nothing but inductor. Inductor means coil. And another is nothing but the capacitor. These two components are connected in series with a switch. यहाँ पे एक switch है. Clear? Now, what happens here? Initially, when we are considering inductor and capacitor in series, this capacitor is fully charged. Capacitor is fully charged means, according to your concept, whatever you have seen in electrostatic, that is when the capacitor will get fully charged. At that time, the energy of capacitor, which is equal to nothing but half CV square, where C is nothing but the capacity of the capacitor and V is nothing but the potential applied across the capacitor. So what we have taken in this circuit initially, a capacitor and inductor, they are in series, and the capacitor is fully discharged. Fully charged. As this capacitor is fully charged, that capacitor has an energy E is equal to half CV square. So this energy I can say as the electrostatic energy. So I will say it is as the EE, as an electrostatic energy. Clear? Now, when the switch is closed, when the switch gets closed, at that time this capacitor will start discharging. The capacitor will start discharging, and when capacitor will start discharging, at that time it will send the current through this inductor. So when it is sending a current through an inductor, there is a change in magnetic flux to this inductor. As there is a change in magnetic flux through the inductor will develop the energy. Now how inductor will develop the energy? Whenever through a discharging, when capacitor will start discharging, current start flowing through this inductor. As that current will start flowing through the inductor, there is a change in magnetic flux through this inductor. And due to that change in magnetic flux through the inductor, there is a development of EMF across that inductor. And hence, a magnetic energy will get developed inside the inductor. So that magnetic energy I can say as EM. So your magnetic energy developed in the conductor is half Li square, which you have seen in the chapter magnetic effect of electric current. Means what? As your capacitor will start discharging, your electrostatic energy will get converted, start converting into magnetostatic energy. Fine? Then, second thing is, as this capacitor will start discharging, when this capacitor will get fully discharged, at that time, the current through the inductor reaches to the maximum value. When capacitor will be fully discharged. Capacitor will be fully discharged means what? Capacitor will use its total charge to the inductor. At that time, the induced current through the inductor will reaches to peak value. Peak value of the induced current is I0. So the peak value reaches to the inductor is I0, and at that time, your magnetostatic energy will become half Li0 square. Clear? Now, here I will show the flow of current through this inductor. When this capacitor will start discharging, at that time, the current starts flowing through this inductor in this loop direction, like this line. Yes, sir. And when this current will start flowing through this inductor, there is a change in magnetic flux. Due to that change in magnetic flux, there will be a development of induced current. And therefore,
a magnetostatic energy will get developed across the inductor. It will be half Li square. What is the meaning? As capacitor will start discharging, electrostatic energy will get converted into magnetostatic energy slowly. And when this capacitor is fully discharged, capacitor is fully discharged means what? When capacitor gives its all charge to the inductor, so the current flowing through this inductor will reaches to maximum value, that is the peak value of current I0. So the magnetostatic energy inside this conductor will become as a half Li0 square. Means when this magnetostatic energy reaches to its maximum value, at that time your capacitor is fully discharged. Capacitor will get fully discharged. Means there will be no charge on the capacitor. इसलिए इस प्लेट पे मैंने कोई चार्ज नहीं दिया. Right? Now, once this capacitor will get fully discharged, whole electrostatic energy will get converted into magnetostatic energy. So maximum magnetostatic energy is nothing but half Li0 square. At that time, this inductor is reaching magnetostatic energy. So when energy stored by the inductor is maximum, at that time, whatever developed EMF is there inside this inductor, that developed EMF inside the inductor will start sending the current through a capacitor. Now this inductor is reaching energy. High energy stored in the inductor. So as high energy will get stored in this inductor will send the current to this capacitor. And when inductor will send the current to the capacitor will start charging. So the charging of capacitor now starts. And as this charging of capacitor will start, now your magnetostatic energy slowly start get converting into electrostatic energy. So your magnetostatic energy now start converting into electrostatic energy. So slowly now this capacitor will get charged. धीरे धीरे capacitor charge होता जाता है. So as this capacitor start charging, and when the charging of capacitor will get completed, at that time your capacitor will be fully charged. At that time, the all magnetostatic energy will get converted into electrostatic energy. Means when this capacitor will get completely charged, when capacitor will get completely charged due to your magnetostatic energy, at that time the energy to an inductor reduces to 0. So magnetostatic energy now reduces to 0 when your capacitor will fully get charged. Once this capacitor is fully charged, now again it sends the current. Clear? See here, again I am repeating. Figure number 1, 2, 3 and 4. See here, in figure number 1, capacitor is fully charged and it is sending current I. Figure number 2, capacitor will be completely get discharged. Capacitor has given its all charge to the inductor. So inside the inductor, induced current reaches to maximum value I0, and your total electrostatic energy gets converted into magnetostatic energy, and the maximum magnetostatic energy will appear across the inductor, and capacitor is fully discharged. Capacitor पूरा empty हो गया. Now in third figure, inductor is reaching energy. Capacitor is fully discharged. So what happens now? Energy flow will start from maximum to minimum. So now there will be a flow of energy from inductor to capacitor. So now inductor starts sending current to the capacitor.
As inductor will start sending current to the capacitor, now capacitor will start charging. Capacitor will start charging means on the plate where it receives the induced current, positive charge will get induced. And now charging of capacitor starts in the third figure due to current. As capacitor charging will go on starting, when capacitor will get fully charged, capacitor will get fully charged means what? The maximum current starts flowing through the capacitor as a IC. At that time, inductor becomes empty. All inductor energy is given to the capacitor. That's why capacitor is fully charged. And as this capacitor is fully charged, it reaches to its maximum energy, that is equal to half. It reaches to its maximum energy as a half CV0 square. Clear? And now once this, in the figure number 4, once your capacitor will be get fully charged, इसका मतलब अभी कैपेसिटर के पास मैक्सिमम एनर्जी है, इंडक्टर के पास कुछ भी नहीं है, इंडक्टर हैज जीरो एनर्जी. So now what? The current will reverse the direction. अभी करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी. कैसे? उल्टा सीक्वेंस आएगा. Now as this capacitor is fully charged, this capacitor will sending the current. ये देखो रेड फिगर तभी उनका डायग्राम दिखा है. Red arrow indicate that now capacitor will start giving its current to the inductor. तो यहाँ पे capacitor ने उसका current देना start किया. Then inductor reaches to maximum value. Inductor maximum value पे reach होगा. तो अभी inductor is reaching current. तो क्या होगा? Now discharging of capacitor start and inductor will get the maximum energy. इसका मतलब क्या है? Inductor and capacitor they will act as a balance. पहले क्या था? पहले फिगर में capacitor fully charged था, उसके पास maximum energy थी. That's why capacitor gives the flow of energy from capacitor to inductor. इसलिए इंडक्टर का करंट धीरे 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 बढ़ता है. यहाँ पे इंडक्टर का करंट सेकंड फिगर में मैक्सिमम हो गया. अभी इंडक्टर का करंट एनर्जी मैक्सिमम हो गया बट कैपेसिटर गेट फुल्ली डिस्चार्ज. इज इट राइट? तो अभी फ्लो ऑफ एनर्जी विल स्टार्ट फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर. अभी इंडक्टर टू कैपेसिटर फ्लो ऑफ एनर्जी स्टार्ट. तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट. When capacitor will get fully charged, इसका मतलब करंट थ्रू कैपेसिटर इज मैक्सिमम. तो इंडक्टर के अक्रॉस कुछ भी करेंगे, एनर्जी थ्रू इंडक्टर इज जीरो. व्हाई? बिकॉज इंडक्टर हैज गिवन ऑल इट्स एनर्जी टू द कैपेसिटर. तो अभी एनर्जी फ्लो कहां से होगा? वापस कैपेसिटर टू इंडक्टर. तो अभी यहाँ देखो कैपेसिटर के यहाँ पे नीचे चार्ज आया है पॉजिटिव. तो इसका मतलब नाउ कैपेसिटर विल सेंड करंट टू इंडक्टर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अभी धीरे धीरे क्या होगा? कैपेसिटर उसका करंट इंडक्टर को देगा तो इंडक्टर विल स्टार्ट बिल्डिंग द एनर्जी. जब ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होगा तो इंडक्टर के पास मैक्सिमम एनर्जी होगी. इंडक्टर के पास मैक्सिमम एनर्जी होगी तो वो किसको देगा? जिसके पास नहीं है एनर्जी उस कैपेसिटर को दे देगा. तो कैपेसिटर वापस चार्ज होना स्टार्ट. तो लाइक दैट मैनर there is continuous exchange of energy from capacitor to inductor, inductor to capacitor. Is it right? अभी देखो सीक्वेंस क्या है? कैपेसिटर से इंडक्टर के पास गई एनर्जी, इंडक्टर से कैपेसिटर के पास गई. ये देखो कैपेसिटर के पास एनर्जी थी, उसने दी इंडक्टर को. जब इंडक्टर के पास मैक्सिमम एनर्जी हो गई तो उसने दी कैपेसिटर. वापस जब कैपेसिटर के पास मैक्सिमम एनर्जी हो गई उसने डायरेक्शन रिवर्स किया, उसने दिया उस कैपेसिटर एनर्जी गिवन टू इंडक्टर. जब इंडक्टर के पास ज्यादा एनर्जी होगी तो वो देगा कैपेसिटर. मींस देयर इज अ कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर, इंडक्टर टू कैपेसिटर. एंड देयरफॉर योर सर्किट containing L and C components start oscillating. Oscillating means what? एक दूसरे की एनर्जी एक दूसरे को देगा. And that type of oscillations are to be called as a LC. Right? Now here in this LC oscillation, एक कैपेसिटर इंडक्टर को एनर्जी दे रहा है, इंडक्टर कैपेसिटर को एनर्जी दे रहा है. Assuming that
there is no loss of energy during the exchange. इस इंडक्टर के अक्रॉस भी कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं है, कैपेसिटर के अक्रॉस भी कुछ भी एनर्जी लॉस है, इसलिए कंटिन्यूअसली वो दोनों एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं. दिस इज द आइडियल एजम्पशन, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. Practically, when capacitor gives its energy to the inductor will offer certain resistance, तो उसमें कुछ एनर्जी लॉस होगा, फिर वो इंडक्टर एनर्जी देगा कैपेसिटर. Means during this circulation there is a continuous loss of energy, and finally energy will reduces to zero. तब oscillation क्या होगा? Stop. अभी this type of oscillation is electric oscillation. एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ फॉर सिंपल पेंडुलम. सबको सिंपल पेंडुलम पता है. सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? एक बॉब होता है. इस बॉब को अगर मैंने कुछ चार्ज दिया तो दिस बॉब विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग. बॉब ऑसिलेट हो रहा है मींस व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल. कंटीन्यूअसली देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. लेकिन क्या होता है? ये पेंडुलम एयर में मूव हो रहा है, तो एयर विल ऑफर ए रेजिस्टेंस. तो जब वो एयर से मूव हो रहा है, एयर उसकी एनर्जी खींच रहा है. So there is a loss of energy from pendulum to medium as a air. And इसलिए after some time धीरे-धीरे amplitude of the oscillation will start decreasing and finally pendulum will come to stop. जब pendulum stop होगा इसका मतलब what? उसकी सारी energy medium ने ले ली. Got it? Same thing happens here. यहाँ भी क्या होता है? पहले कैपेसिटर के पास ज्यादा एनर्जी है तो वो इंडक्टर को दे रहा है, इंडक्टर के पास ज्यादा एनर्जी हो रही है वो कैपेसिटर को दे रहा है. लेकिन ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज अगर उसमें एनर्जी लॉस हो गया तो फाइनली द ऑसिलेशन विल. अगर आपको याद है तो मैंने और एक ऑसिलेशन चैप्टर में आपको और एक कंसेप्ट पढ़ाया था, और उस कंसेप्ट में हमने दो पेंडुलम कंसीडर किए थे अगर याद है तो. At the same rigid support, there are two pendulum, A and B. उसमें हमने क्या किया था? For A pendulum, we start applying a force. A pendulum को हमने force apply. So what happens is A pendulum will start oscillating. इसने oscillation start किया. जब इसने oscillation start किया, तो इसके vibration B ने absorb किया, और B भी धीरे-धीरे oscillate होना start. B धीरे-धीरे oscillate होना स्टार्ट हो गया and B reaches to its maximum amplitude. At that time A will come to rest. फिर क्या होता है? B amplitude, B pendulum gives its energy to the A. तो at that time B उसकी एनर्जी धीरे-धीरे लॉस करता है, तो A की एनर्जी बढ़ती है, तो A will start oscillating with time. इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन. तो पेंडुलम में हमने देखा है मैकेनिकल ऑसिलेशन, और ये L and C कंपोनेंट they are the non-ohmic component, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन. Got it? तो इसमें मेन थिंग क्या है? In LC oscillation, capacitor gives its energy to the inductor, means electrostatic energy will get converted into magnetostatic energy. Magnetostatic energy will get converted into electrostatic energy. Means your LC oscillation obeys law of conservation of energy. That is, electrostatic energy will get converted into magnetostatic energy, or magnetostatic energy will get converted into electrostatic energy without losing. So that type of oscillations are called as the ideal LC oscillation. और जब ideal LC oscillation होते हैं, at that time the amplitude of oscillation remains constant for a longer interval of time. लेकिन अगर वहां पे एनर्जी लॉस हो गया, then slowly the amplitude of oscillation will goes on decreasing and finally it will become clear. तो यहाँ पे आपका very short answer और MCQ question. In LC oscillation, electrostatic energy will get converted into
magnetostatic energy. Or afterward, when capacitor will get fully discharged, at that time magnetostatic energy will get converted into electrostatic energy without loss. Therefore, amplitude of oscillations are stable. And that type of oscillations are to be called as your LC. Right? But ये ideally possible है. Practically क्या है? Inductor resistance offer करता है. So practically this circuit has a two disadvantages. One is inductor will offer a resistance, and therefore full electrostatic energy will not get converted into magnetostatic energy. So there is energy loss. तो जब energy loss होता है, तो amplitude of the oscillation decreases, and finally oscillation will get stopped, or amplitude of oscillation will become. ये पहला disadvantage. And the second disadvantage of this circuit is, though the LC, your inductor will offer a zero resistance, still electrostatic energy जब magnetostatic energy में जाती है, या magnetostatic energy जब electrostatic energy में जाती है, at that time there will be a generation of electromagnetic waves. जो हमने last year electromagnetic waves chapter देखा है, उसमें हमने देखा है when electrostatic energy will get converted into magnetostatic, और magnetostatic जब electrostatic में convert होती है, at that time the waves are emitted, which is nothing but the electromagnetic waves. So electromagnetic waves generate होती है, and that's why these circuits are used in the radio station. Radio receiver में LC circuit use की है. Why? Because LC circuit during oscillation generates the electromagnetic waves, and that electromagnetic waves are used to transmit the signal in the radio station. So here is the second. Is it right? एक तो oscillation zero होते हैं, और there will be a generation of electromagnetic waves. So this is about your LC oscillation. Is it okay? Now, I will start your second topic as an electric resonance. I'll teach for 10 minutes, and afterward you ask your doubt. Right? Now, in this electric resonance, this resonance word you have heard in your superposition of waves. In that superposition of waves, you have heard the word as a resonance, and in that resonance word, if you are remembering, मुझे पता नहीं आपने क्या क्या पढ़ा है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हमने ये रेजोनेंस कंसेप्ट देखा है. दिस रेजोनेंस इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, ऐसे मैंने उस टाइम बताया था. एंड फोर्स वाइब्रेशन में हमने दो फ्रीक्वेंसी देखी थी. वन इज द natural frequency of body, and second is nothing but the external periodic frequency. So when natural frequency of a body is exactly equal to the external periodic frequency, at that time your body will oscillate with maximum amplitude, and that phenomena is to be called as a resonance. ये कंसेप्ट हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में देखा था. क्लियर? एग्जांपल अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाती हूँ. हमने सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट देखा था. सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में हमने पेपर राइडर मेथड देखा था. वी आर कीपिंग ए पेपर राइडर at the center of vibrating wire, और फिर ट्यूनिंग प्रोब वाइब्रेट करके उसको सेंटर में लगाते हैं. So what happens? That paper rider will start vibrating, and at one particular length वो paper rider नीचे गिरेगा. When that paper rider will fall down, when the vibration of wire becomes maximum, means उसका amplitude maximum होता है. और वो maximum कब होता है? When natural frequency of wire is exactly equal to the
tuning fork frequency, at that time wire will vibrate with maximum amplitude and your pepper adder will fall down. And that phenomenon is to be called as your resonance. Here, or there is another example as a resonance tube. Resonance tube का देखो, air column open at one end, pipe is open at both end. वो concept उसी चैप्टर में देखा था, उसमें भी हमने देखा था. At one particular length of air column, you will get a maximum sound at the opening. क्यों मिलता है? Because resonance occur. Resonance क्यों मिलता है? Because external periodic frequency, tuning fork की frequency जब air column की frequency से match करती है, exactly equal होती है, at that time your air column will vibrate with maximum frequency, तब resonance होता है and you will get the louder sound. तो वो क्या हो गया? मैकेनिकल रेजोनेंस. अभी हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखना है? इलेक्ट्रिक रेजोनेंस. अभी इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कंसेप्ट विल रिमेन सेम. क्या इलेक्ट्रिक रेजोनेंस का कंसेप्ट? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी. एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी मींस एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपोनेंट से मैच होती है तो द सर्किट विल गिव्स द phenomenon as resonance. And therefore in electricity there are two types of resonance will be there. Which two types of resonance? One is called as a series resonance and another is called as a parallel resonance. Abhi first I am going to consider this series resonance. In this series resonance, what is the thing? In series resonance, there is an inductor, there is a capacitor, and there is a resistor. All these are connected across your AC voltage. So when they are connected across the AC voltage, at that time, inductor, capacitor, resistance, they are connected across AC voltage. That is E is equal to E0 sin omega t. Is it right? Now, what is the thing? At that time, this omega is nothing but the frequency of the AC. When this AC frequency matches with the natural frequency of these three components, at that time, series resonance will occur and the maximum current will flow. वहाँ पे मैकेनिकल रेजोनेंस में क्या होता है? एम्पलीट्यूड विल बिकम मैक्सिमम. यहाँ पे क्या होगा? करंट फ्लो विल बिकम मैक्सिमम. एंड व्हेन करंट फ्लो मैक्सिमम होगा तो व्हाट वी कैन से देयर इज ए सीरीज रेजोनेंस. गॉट इट? सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सीरीज रेजोनेंस. वैसे यहाँ पे पैरेलल रेजोनेंस भी है. Now in parallel resonance, what is the thing? There are two components, inductor and capacitor. These two components are connected in parallel combination, and across that a AC voltage is applied. तो आपका AC voltage है E is equal to E0 sin omega t. तो यहाँ पे आपको दो करंट है. करंट फ्लोइंग टू इंडक्टर इज IL, करंट फ्लोइंग टू कैपेसिटर इज S. तो जब ये सर्किट में रेजोनेंस होता है तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस? द हियर योर जब इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा, एट दैट टाइम पैरेलल कॉम्बिनेशन में टू सेम रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड पैरेलल. तो यहाँ पे क्या होगा? रेजिस्टेंस विल बिकम मिनिमम. और जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा देन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बिकम मैक्सिमम. फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल रेजोनेंस. इज इट ओके? नाउ हियर वी आर गोइंग टू कंसीडर फर्स्ट सीरीज रेजोनेंस का डिटेल देखेंगे. अभी सीरीज रेजोनेंस में देखो कौन से कंपोनेंट सीरीज में? L, C and R. And in the previous lecture,
LCR series circuit, we have seen that when inductor, capacitor and resistor are connected in series, at that time the effective resistance is the impedance, which is equal to under root of R square plus XL minus XC bracket square. बराबर, ये impedance है. Now what is the basic concept of series? Series resonance जब होता है, at that time current flowing through the circuit is maximum. Current maximum है, इसका मतलब first characteristic is what? The impedance offered by the circuit should be minimum. जब impedance minimum होगा, then and then only the current flowing through the circuit will become maximum. और ये कब possible है? When it is possible? It is possible जब ये जो वैल्यू है सारी Z की ये मिनिमम होनी चाहिए. ये मिनिमम होनी चाहिए means what? Then your XL is equal to XC. जब inductive reactance is equal to capacitive reactance, at that time देखो क्या होगा? When inductive reactance is equal to capacitive reactance means ये difference क्या हो जाएगा? Zero. ये difference zero हो जाएगा means under root में क्या रहेगा? R square plus zero. तो R square plus zero means R square. Square root of R square क्या आएगा? Z. Means when XL is equal to XC, at that time your impedance will become minimum, which is equal to, and at this condition is to be called as the conditions of series resonance. So here the third one is this is called as the condition of series resonance. So condition of series resonance क्या है? Conditions of series resonance is nothing but XL is equal to X. At that time, Z becomes minimum, which is equal to R, and the current flow will become maximum. कब होगा भी? Condition of resonance क्या है? Series resonance. XL is equal to X. आपको XL का वैल्यू पता है? XL is equal to omega L. XC is equal to 1 upon omega C. यहाँ पे देखो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC. एक ओमेगा इधर लेके गए, L को डिवीजन में लेके आए. तो व्हाट विल से ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f. लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंस वाली, सर, राइट? 2 पाई fr इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC. Therefore, Fr is equal to 1 upon 2 pi under root of S. So this I am getting as a equation for resonant frequency. So this is your resonant frequency in series resonance. कैसे निकाला? From the condition of series resonance. तो ये मुझे ले लें यहाँ पे point number 4, resonant frequency. Got it? I will again repeat all the points. Concentrate. जो बचाया वो कल के परसों के लेक्चर में. One thing, LCR, they are connected in series combination. At that time, it will offer a impedance. जो हमने LC series circuit में देखा है. Impedance is equal to Z is equal to under root of R square plus XL minus XC bracket square. So ये रेजोनेंस कब होगा? जब करंट मैक्सिमम होगा. तो रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशन क्या है? करंट फ्लोइंग शुड बी मैक्सिमम. करंट मैक्सिमम है इसका मतलब है इंपीडेंस शुड बी मिनिमम. एंड टू गेट इंपीडेंस मिनिमम, व्हाट इज द कंडीशन? XL is equal to XC. जब XL is equal to XC होगा तो इस इंपीडेंस में सेकंड टर्म 0 हो जाएगा एंड Z मिनिमम हो जाएगा आपका. And Z minimum is equal to R means what? Your LCR series circuit gets converted into purely resistive circuit. So this is to be called as a condition of resonance. So ये one mark question. What is the condition for series resonance? So what is the condition for series resonance? XL must be equal to XC. अगर XL is equal to XC एक condition लिखा तो इसके बाद भी पुट किए. XL is what? Omega L. XC is what? 1 upon omega C. Omega को एक साइड में कर लिया तो omega square is equal to 1 upon LC.
फिर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ। ओमेगा का वैल्यू पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, बट कौन सी फ्रीक्वेंसी? एट रेजोनेंस, देयरफॉर इट इज 2 पाई एफ हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन under root of LC. Therefore, resonating frequency in series resonance is 1 upon 2 pi under root of LC. So, this is nothing but your equation for resonant frequency in series resonance. Clear? और कल नेक्स्ट लेक्चर में वापस इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक भी बन सकते। फाइन, गॉट इट? ओके, यस मैम। ओके, अभी आपके किसी के डाउट्स हैं? नो मैम, कल के लेक्चर में फिर पूरा होने के बाद देखते। हाँ, पूरा वेडनेसडे के लेक्चर में जब सब खत्म हो जाएगा सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, एट दैट टाइम वी कैन डिस्कस आवर डाउट्स। फाइन, ओके मैम। हाँ, तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन क्या हो सकते हैं ये देखो। द क्वेश्चन इज डिराइव इक्वेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज रेजोनेंस। तो आपको ये सर्किट ड्रॉ करना है, कंडीशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस लिखना है, एंड फ्रॉम कंडीशंस ऑफ सीरीज रेजोनेंस यू हैव टू फाइंड आउट दिस एफ। गॉट इट? यस मैम। ये हो गया 2 मार्क का क्वेश्चन। इसका 1 मार्क का क्वेश्चन क्या है? स्टेट द कंडीशंस फॉर कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस। तो इसका सीरीज रेजोनेंस का कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है सीरीज रेजोनेंस? XL is equals to XC. XL is equal to XC. Got it? Yes ma'am. And one more 2 mark question. State the characteristic of series resonance. तो यहाँ पे मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक आपको बोल दिए थे। The first characteristic हाँ of मैम। series is impedance should be minimum. Second is so current is